लेट हला मते गोटे ट्रेनिंग थला तो आज्ञा सर बबल लिस्ट का मु आज संध्याला इवनिंग के पठे देबी प्रोग्राम उडा आज्ञा सर in this session will be learn to identify the features of linked list, implement a single linked list, right? इस सेशन रे हमें लिंक लिस्ट रो कोन फीचर्स अछि कोन तार यूजेस अछि एंड सिंगल लिंक लिस्ट कोन से विषय रे डिस्कशन करा है। देखो लिंक लिस्ट एक्चुअली कोन काहे की इंप्लीमेंटेशन होउची काहे ता कांसेप्ट आसिला से विषय रे दिया है। प्रथम बुझिया पड़ो पूरा सिनेरियो काहे की लिंक लिस्ट आसिला, राइट? Suppose you have to write an algorithm to generate and to store all prime number between 1 to 10 lakhs and display them. How will you solve this problem? Consider the following algorithm. You use an array solve this problem, right? 1 to 10 lakhs time prime number display karibar अछि जदि मो पाखरे लिंक लिस्ट रो कांसेप्ट नाही तले मु कोन करबी array डिक्लेयर करबी तो array डिक्लेयर करले मु एई एल्गोरिथम स्टेप दे कि मु सेथरे मु प्राइम नंबर टाको डिस्प्ले कर पारी, राइट? बट एई थरे कोन प्रॉब्लम कोन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस एल्गोरिथम? The number of prime number between 1 to 10 lakhs is not known. Since you are using an array to store prime numbers, you need to declare an array arbitrarily large size to store the prime number, right? 1 to 10 lakhs भीतर suppose मु तुम कहबी जे 1 to 1 lakh भीतर नै जा 1 lakh भीतर मते डाटा ता भीतर केतेटा प्राइम नंबर अछि मते सेटा शो कर तो जेटा प्राइम नंबर अछि मु ताको शो करिया पूर्व मु ता कोन करबी गोटे array भीतर निश्चय डिक्लेयर करबी मु ताको नंबर टा डिक्लेयर करबी जे जो array टा डिक्लेयर करबी जे 1 लाख जाय मु array टा डिक्लेयर करबी कारण ता भीतर केतेटा मोर प्राइम नंबर अछि केतेटा मोर प्राइम नंबर नाही सेटा तो मु जानि ना। सपोज मु गोटे डिक्लेयर करली 1 लाख जाय मु प्राइम नंबर डिक्लेयर माने साइज टा डिक्लेयर करली ता भीतर 1000 मोर प्राइम नंबर आसला बाकी आउ मोर स्पेस सब वेस्ट गला बुझला सेपे से कहिछि सेपे से कहला द नंबर ऑफ यू नीड टू डिक्लेयर एन array of arbitrarily large size to store the prime number, right? Disadvantage of this approach, supposed to declare an array of size n if the number of prime number between 1 to 10, 1 lakh is more than n, then all the prime number cannot be stored. If the number of prime number is much less than n, a lot of prime memory space is wasted, right? Then मु तुम कहबी जे मत मु गोटे साइज डिक्लेयर धर मोर 10 जाय मु साइज डिक्लेयर कर ता भितर मोर पांचटा मोर प्राइम नंबर आसला बाकी आ रेस्ट पांचटा मोर स्पेस मोर वेस्ट कला ना सेटा बुझला। Thus you cannot use an array to store a set of element if you do not know the total number of element in advance. How do you solve this problem? By having some way in which you can allocate memory as and when it is required. When you declare an array, a continuous block of memory is allocated. Let us suppose you declare an array of size 10 to store first 10 prime number, right? So it amoro prime number is stored. One continuous block of memory allocated for the prime array to store 10 elements. If you know the address of the first element in the array, you can calculate the address of the any other element as soon in the following formula. That is address of the first element plus size of the element into index of the element. When memory is allocated dynamically, a block of memory is assigned arbitrarily from any location in the memory. Therefore, unlike array,
These block may not be continuous and may be spared randomly in the memory. Let us see how this happens by allocating memory dynamically for the prime numbers. Allocate memory for 2. 2 मोर allocated है तो से जो memory जो allocated है से जो value टा store है सेटा मोर गोटे variable गोटे तारा address point टा रहला सेटा 1002. Applying allocate memory for 3 arbitrarily 1036. Allocate memory for 5 1008 address. Allocate memory for 7 1020. Allocate memory for 11 1030. Right now, if you know the address of the first element, you can calculate the address of the rest of the element. Right, this is because all the elements are spared at random location in the memory. To access any element, you need to know its address. Therefore, it would be good if every allocated block of memory contains the address of the next block in sequence. Right? जदि मते calculate करिबा अपेक्षा जदि मु जो फर्स्ट नोड जदि मते जो डिक्लेयर कराई छी तार एड्रेस टा मोर पाखरे अछि ताले नेक्स्ट नोड जोटा मोर जो आसीबो तार एड्रेस टा जदि प्रीवियस नोड टा जदि मोर एड्रेस ता पाखरे रखि दबो जदि ताले मते आ कैलकुलेट करिबा दरकार मु डायरेक्टली मु से एड्रेस पाखु मु जाई पहुंच पई जंते 2 मोर कहार एड्रेस रखला 1036 माने की 3 कहार रखला 1008 माने कहार 5 कहार रखला 1020 माने कहार मोर 7 राइट 7 कते 1020 तापर 7 मोर को रखला कते 1030 कहार 11 हला तो एटा मोर चेन सिस्टम है the given list gives the list of linked structure where each block is linked to the next block in sequence. Right. You can declare a variable start that store the address of the first block. Start, right? कारण मते फर्स्ट एलिमेंट को होल्ड कर रखे पे गोटे वेरिएबल दरकार सेटा होची मोर स्टार्ट ताले मु जानि परिउ जे एटा मोर एकथु मोर एलिमेंट ता स्टार्ट हिच. You can now begin at start and move through the list by following the link. An example of data structure that implement this concept is a linked list. Linked list is a dynamic data structure, allows memory to be allocated as and when it is required, consists of chain of element in which each element is referred to as a node, right? आगे होची मोर स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर माने कांस्टेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड लिंक लिस्ट होची मोर डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर जोटा कि रन टाइम रे मोर वैल्यू टा को असाइन करियो रन टाइम रे मोर वैल्यू टा को एक्सेस करियो रन टाइम रे जो डाटा टा को एक्सेस करियो से अनुसार से मेमोरी से ऑक्युपाई करियो मते आउ प्रथम माने फास्ट टू मते साइज मते डिक्लेयर करबा दरकार नै बुझला. A node is the basic building blocks of linked list. तो गोटे नोड मोर दीटा पार्ट रे मोर डिवाइड हेताय मोर लिंक लिस्ट रे गोटे होची मोर डाटा पार्ट आ गोटे होची मोर लिंक डाटा पार्ट रे मोर इंफॉर्मेशन रहबो लिंक पार्ट रे मोर नेक्स्ट नोड रो एड्रेस ता पाखरे स्टोर हेकी सेटा रह राइट. ए नोड कंसिस्ट सर माने जो एग्जांपल टा देखुतले प्राइम नंबर जो 2 3 जो लिंक हेकी थिला 2 एड्रेस रखले माने 2 पाखरे 3 रा एड्रेस थिला तो सेमिति करबा हां तो एटा मोर एटा तो मु गोटे नोड जदि धरिबी ताले एटा मोर दीटा नोड हैला ना होची डाटा पार्ट जोठी मोर इंफॉर्मेशन रहिबो आ गोटे होची लिंक पार्ट जे की नेक्स्ट नोड रो लिंक टा को से रख एड्रेस यस सर. The node consists of two parts. Data refers to the information. Data refers to the information held by the node, and link holds the address of the next node in the list. All the nodes in a linked list are present at arbitrary memory location. एटा मोर आर्बिट्रेरी मेमोरी लोकेशन सबुतक नोड रो निजर गोटोडा एड्रेस थाय राइट.
ଏବେ ए जो नोड टा जो 3552 राइट सॉरी 3352 ए नोड रो एड्रेस टा की रखिबो ये रखिबो तो एई जो लिंक टा एटा क्रिएट हो पुनी एई नोड रो एड्रेस टा की रखिबो ये रखिबो तो ए लिंक टा मोर क्रिएट हो देखो therefore every node in a linked list has linked field that store the address of the next node in sequence and लास्ट नोड सदाळे मोर तार लिंक पार्ट नल रहबो कारण लास्ट नोड पर मोर आ किछि नाही तो लास्ट नोड ता मोर सदाळे नल वैल्यू से आसे बुझला to keep track of the first node declare a variable or pointer start which always point to the first node किंतु मु तुमको कहली गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करबो स्टार्ट कहबी जे कि तमरो सदाळे फर्स्ट नोड ताको फर्स्ट नोड रो एड्रेस ताको निजे पाखरे से रख when the list is empty start contains null let us solve the given problem for storing prime number using a linked list report step 2 varying n from 2 to 10 lakhs if n is a prime number insert it in the linked list allocate memory for a new node store the prime number in the new node attach the new node in the linked list display the prime number store in the linked list right consider the following linked list that store the prime numbers then they start eta mora oda list ala when a new prime number is generated it should be inserted at the end of the list initially when the list is empty start contains null start equal to null right consider the given algorithm in the to insert a node in a linked list the list already अछि सेइथरे मु गोटे नुवा नोड गोटे इंसर्ट करिया पे चाहू देखो consider that the list is initially empty जदि मोर लिस्ट जदि ऑलरेडी मोर एम्प्टी अछि माने लिस्ट किछि नाही जदि स्टार्ट इक्वल टू null then insert a prime number 2 allocate the memory of the new node assign the data field of the new node if start is null then make start point to the new node start ta मोर point हेगला कोठी new node go to step 6 कोन एटा मोर make the next field of the new node point to null हला again how would insert kariba insert a prime number 3 allocate the memory of the new node assign the data field of the new node if start is null ebe मोर start null नहीं तो start रे मोर गोटे वैल्यू तो मोर 3 नंबर स्टेटमेंट टाको से एग्जीक्यूट करिवो नाही से जंप करिवो कोठी फोर्थ नंबर locate the last node in the list and make it as current to locate the last node in the list execute the following step make the first node as current a current node कोई गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करू सेटा फर्स्ट नोड को असाइन करिवो then repeat step C until the successor of current node becomes null right successor of current node becomes null right make the next field of the current node point to the new node next field of the current node point to the new node make the next field of the new node point to the null एबे बुझला तो एमिति मोर इंसर्ट से करी करी जीवो जा जोटा भी इंसर्ट करबो से अनुसार से स्टेप टाको फॉलो कर बट एइतरे मोर गोटे डिमेरिट्स अछि कोन व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ दिस एल्गोरिथम consider a list 10,000 numbers to insert a number at the end of the list you first need to locate the last node in the list जदि मते गोटे लिस्ट रो एंड रे जदि गोटे नोड जदि इंसर्ट करिवार अछि ताले मते गोटे वेरिएबल एमति दरकार जे कि लास्ट नोड जेमति मोर स्टार्ट जेमति मोर फर्स्ट नोड को सदा इंडिकेट करे सेमति गोटे आ गोटे वेरिएबल गोटे मते गोटे दरकार जे कि लास्ट नोड को इंडिकेट करे ताले मु लास्ट जदि मते लास्ट जदि किछि इंसर्ट करिवार अछि तो मु डायरेक्टली लास्ट को जी मते एंटायर नोड आउट ट्रैवल करबा दरकार बुझला to reach the last node you have to start from the first node and visit all the preceding node before you reach the last node से माने स्टेप बाय स्टेप रे जीवा पड़ियो 2 पुनी 3 5 एमती हां जदी मते लास्ट नोड जदी मैं डिक्लेयर न करूची जदी लास्ट नोड डिक्लेयर न करूची ताले मते स्टेप बाय स्टेप जीवा को जदी मु लास्ट नोड डिक्लेयर कर दोची मते स्टेप बाय स्टेप दरकार नै मु डायरेक्ट लास्ट नोड दूची राइट
This approach is very time consuming for lengthy process. Therefore, a better approach is that declare a variable last, which will be store the address of the last node in the list. Hence, you need to maintain two variables, start and last, to keep track of the first and last node in the list respectively. If the list is empty, start and last point to null, right? It was a modification, right? This refers to the given algorithm to insert a node at the end of the linked list. Allocate the memory of the new node. Right, start equal to null, last equal to null. Insert a prime number equal to 2. In prime number would 2 insert. Allocate the memory of the new node. Assign the data field of the new node. If start is null, then if the start is empty, make the start point to the new node and last also point to the new node. Go to step 6. Next field of the new node point to the null. Right? Again, I would insert kariba. Insert prime number 3. Allocate memory of the new node. Assign the data field of the new node. If start null, so item or execute avani. 3 number step execute avani. So make the next field of the last point to the new node. So next field of the last point to the new node. It is new node, right? Then make the last new node as a last. Make the next field of the new node point to the null. Clear? Now consider another problem. Suppose you have to store the marks of 20 students in the ascending order. How will you solve this problem? Algorithm which use an array to solve this problem, right? Array through to jadi mu solve karibi jadi eta mora hobo set n equal to 0, number of marks enter, repeat until n equal to 20, accept marks, locate the position where marks must be inserted for j equal to n minus 1 down to I, then move aj to aj plus 1, set aj equal to max, then n equal to n plus 1. Mane eta loop re mora seta chala 20 student ro max ta mora store kara, right? Let us perform some insert operation in the array by placing the element at their appropriate position to get the sorted list. Set n equal to 0, repeat until n equal to 10, 20, accept max equal to 10 suppose. Locate the position where I max term must be inserted. I for j equal to n minus 1 down to I, move aj to aj plus 1, 10 asila, n equal to n plus 1. Then again say ye karibo, to emit insert kari jibo. तो एठी डिमेरिट्स कोन हला देखो धर मोर आ प्रीवियस केस रे मोर कोन 20 इंसर्ट करथला एबे मोर 17 मार्क्स इंसर्ट कर 17 मार्क्स रा कोन 10 आउ 20 न मझरे इंसर्ट हबा दरकार सी कोन करबो 20 टा को प्रथमे शिफ्ट करबो नेक्स्ट नोड को पुनी 17 टा को इंसर्ट करबो तो एमिति जदी मोर जदी एमिति जदी करबो जदी ताले केते टाइम नबो देखो गोटे लंबा जदी लिस्ट गोटे थिबो ताले केते टाइम नबो गोटे जदी मोर गोटे स्मॉल वैल्यू जदी आसलो तो गोटे शिफ्ट करबी तापरे स्मॉल वैल्यू टा को इंसर्ट करबी बहुत टाइम लागे राइट तो मते एमिति गोटे सॉल्यूशन दरकार जे कि सितार निज आडू चेक करबो जे मोर जो नोट टा जो इंसर्ट हबो एग्जैक्टली को पोजीशन रे मोर इंसर्ट मते आ शिफ्ट करबा दरकार राइट एटी पई से कहूची कि what is the problem in this algorithm? To insert an element at any position other than the end of the list, there is an additional overhead of shifting all succeeding element one position forward. Similarly, to delete an element at any position other than the end of the list, you need to shift the succeeding element one position backward, right? When the list is very large, this would be very time consuming. From the preceding example, we can conclude that insertion and deletion at any position other than the end of an array is complex or inefficient. How can we overcome this limitation?
By using a data structure that does not require shifting of data element after every insert or delete operation. A linked list offers this flexibility, right? Linked list मोर array रे सेटा हबन, but linked list मु easily सेटा करते, right? array रे कोन जदि मोर array रे गोटे list अछि, से list रे जदि मोर data already अछि, मु धर सपोज मु डाटा जेमति स्टोर कली 10 20 30 एमति स्टोर करिक ऑलरेडी रखि ता भीतर मु 15 टा इंसर्ट करी तो मोर 15 टा कोड इंसर्ट हबा दरकार 10 आउ 20 मझिरे तो मु कोन करिवि गोटे गोटे शिफ्ट करी करी जी राइट जदि मोर बड़ लिस्ट जदि थिबो ताले मु कोन करिवि एटा बहुत टाइम लागिवो गोटे गोटे शिफ्ट करी कला से बहुत टाइम लागिवो तो मते एमिति किछि परमानेंट सॉल्यूशन दरकार जेमति मु तुमको कहथली जे से रन टाइम रे चेक करिवो जे तमरो डाटाटा एक्जेक्टली को पोजीशन रे मोर इंसर्ट है देन सेठी आ शिफ्ट करिया दरकार से डायरेक्टली सेठी इंसर्ट कर दे राइट तो सेही प्रॉब्लम टा मोर लिंक लिस्ट थ्रू रु सेटा मोर सॉल्व हो परिबो बुझला इंसर्ट मैक्स 17 देखो एठी मोर मैक्स 17 टा मोर इंसर्ट हबो मोर ऑलरेडी लिस्ट अछि 10 15 20 राइट एबे मैक्स 17 टा मोर गोटे मेमोरी ऑक्युपाई करिवो बुझला तो मेमोरी ऑक्युपाई करिवो माने कोन 17 रो गोटे एड्रेस थिबो निश्चय तो 17 रो एड्रेस टा को मु 15 को दे दी हला एंड 20 रो एड्रेस टा को मु 17 को दे दी तो 17 टा मोर मझिरे इंसर्ट हे गेला बुझला तो 17 should be inserted after 15 allocate memory for the 17 in the given list node 15 contains the address of the node 20 to add node 17 after node 15 you need to update the address field of the node 15 so that it now contains the address of the node 17 देखो update the address field of the node 15 to store the address of the node 17 देखला कारण 17 रो एड्रेस टा केते 1008 हला सेडा हम की रखला 15 रखला एबे 1020 काहर 20 रो एड्रेस टा की रखिबो 17 टा एला लिंक मजरे 17 टा मोर इंसर्ट हेगला मताउ शिफ्ट करिया दरकार हला now let us solve the given problem using a linked list suppose the linked list currently contain the following element it was more linked list the linked list need to be created in the ascending order of the values therefore the position of the new node to be to the list will be determined by the value contained in the new node write an algorithm to locate the position of the new node to be inserted in a linked list where the node need to be stored in the increasing order of the value contained in them এটা হচ্ছে সার্চিং করিয়া পে হেলা মানে কো পজিশনে ইনসার্ট হবো তা সেইটা পই লজিক এটা after executing this algorithm variable or pointer previous and current will be placed on the node between which the new node to be inserted 16 देखो make current point to the first node make previous point to the null repeat step 4 and 5 until current.info becomes greater than the new node.info current.info is greater than to the new node.info माने new node रे एबे केते अछि 16 अछि 16 टा इंसर्ट करियर अछि त 10 मु एटा को कंटिन्यू करिवि जे जे मोर current node रो माने current node रे जोटा मोर डाटा थिबो सेटा मोर new node to greater than to बड़ा greater than 16 करत भाई make previous point to the current make current point to the next node in sequence again से check करिवो 15 टा मोर 16 to greater than नुह then तो 17 को दिबो शिफ्ट करिवो एबे मोर करंट डाटा टा मोर नोड टू ग्रेटर देन Yes, sir. है नोड टू बी लोकेटेड एबे मु नोड को इंसर्ट करते बुझला once the position of the new node माने प्रोसेस तो सेम लाइक 17 एड्रेस टा 16 नहीं जियो आई गेस once the position of the new node has been determined the new node can be inserted in the linked list a new node can be inserted at any of the following position in the list that is beginning and before right এটা আমি কালি করব ঠিক আছে
beginning and between to calc start kare hala. Okay, thank you. Thank you, sir.